Hello dear students, welcome back to our news channel. Students, in today's news article, we are going to talk about something you might not expect to connect. International trade and invasive alien species. Okay? So, before we start this, let's go back in history. The year was around 1847. In the busy colonial port of Calcutta, goods from East Africa were being unloaded. Okay, and it consisted of boxes of plants, seeds, and trade supplies. And hidden somewhere inside them was an uninvited guest. It didn't make a sound, and no one even noticed it. But in time, it became one of India's most destructive invaders. It was the giant African snail. Yes, snail. A creature that quietly spread across the country, destroying crops, displacing native snails, and even harming human health. And the scariest part is, this isn't just history. Similar things are happening today. Okay. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आज हम किसकी बात कर रहे हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की ओके तो ना 1847 में जैसे शिप पर इंडिया पे ब्रिटिशर्स थे तो कार्गो के साथ साथ एक अफ्रीकन जाइंट अफ्रीकन स्नेल की कुछ वो भी आ गए थे साथ साथ स्पीशीज भी आ गए थे लेकिन पहले तो इसको देख के लोगों ने एडमायर किया था और इतना ध्यान नहीं दिया पर जो पहले एक ऑर्नामेंटल था वो जल्द ही हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बन गया ओके तो अब क्लाइमेट की वजह से क्योंकि यहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है अगर प्रेडेटर होते हैं तो वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं सी नेचर के एक नेचर एक्चुअली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ओके सो हर्बीवोर्स को चेक करने के लिए कार्निवोर्स है एंड प्लांट्स को चेक करने के लिए अनरेगुलेटेड प्लांट्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए हर्बीवोर्स है राइट बट अगर हम बात करते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की तो व्हाट आर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज स्टूडेंट्स इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इज अ plant animal or microbe that is introduced accidentally or on purpose to a place where it doesn't naturally belong नाम से पता चल रहा है ना एलियन मतलब जो नेचुरली किसी भी जगह पे पाया नहीं जाता नेटिव नहीं है ओके तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज कैन बी ऑफ प्लांट एनिमल और माइक्रोब कुछ भी हो सकता है और एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनल इंट्रोड्यूस किया जाता है जब जहाँ पे वो नेचुरली बिलोंग नहीं करता एंड वंस इट अराइव्स इफ इट स्प्रेड्स क्विकली एंड हार्म्स द एनवायरनमेंट it also harms the economy or human health it's called invasive okay तो जब ये जल्दी जल्दी से स्प्रेड भी होना शुरू कर देता है एनवायरनमेंट को हार्म करते इकोनॉमी को हार्म करते ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है देन इट इज कॉल्ड इन्वेसिव ओके now students these species they at first they might seem harmless right but without natural predators they can take over ecosystems okay they outcompete native species they damage crops they can clog rivers they can even destroy forests and even spread diseases ओके तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर एनिमल और प्लांट स्पीशीज तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे नो दे डू ओके स्पेशली जब वो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है ओके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इंडिया में जैसे वाटर हेसिनिथ है वाटर हेसिनिथ इट इज चोकिंग लेक्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेक्स पर है ना बहुत सुंदर सा एक है ना प्लांट होता है जो देखने में ऐसा लगता है कि वाह कितना सुंदर फूल है
right? But it is actually invasive species, and it is choking lakes. Then there's lantana plants invading forest, and there are also certain mosquito breeds which are bringing diseases like dengue and malaria. Okay, but the question is, how do these species get here? Students, कैसे आ जाते हैं किसी भी कंट्री में? स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो एक रीजन है, ट्रेड. ट्रेड इज द ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स लाइक फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग एंड फ्यूल, एंड बिटवीन it happens between countries, right? It keeps the world connected, but it also acts like a highway for a biological hitchhikers. Okay, तो कैसे कैसे बायोलॉजिकल हिचहाइकर्स के लिए एक्ट करते हैं? देखो, जब शिपिंग में बलास्ट वाटर होता है, जिसमें इन शिप्स दे कैरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक लावा और algae, तो आपको पता होगा कि जैसे शिप जब ट्रैवल करता है तो वो ओशन वाटर भी कलेक्ट करता है टू मेंटेन द बैलेंस, दैट वाटर इज नोन एज बलास्ट वाटर. तो उसके साथ जब वो वाटर ओशन का वाटर कलेक्ट करता है एक साथ बॉटम में, तो बहुत सारे स्पीशीज भी कलेक्ट हो जाते हैं. Okay, and then there are containers. See, insect or plant seeds, they hide in wooden crates of plant material. And sometimes, there is also trade in pets or ornamental plants. क्योंकि कुछ लोग they tend to buy exotic fish, birds or plants, and that sometimes escape or are released into the wild. Okay, so this is the reason. And countries today have more than uh, you know trade routes than ever. So back in 1948, वहां पे कुछ 6,000 के आसपास ट्रेड कनेक्शंस थे, लेकिन अब 2000 आते आते 34,000 ट्रेड रूट बन गए हैं. सो विद मोर कनेक्शन कम मोर रिस्क, राइट? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की एलियन स्पीशीज, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज कैसे इंट्रोड्यूस हुए, राइट? नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी, द जायंट अफ्रीकन स्नेल. Now, this particular species, it thrived in India's warm and wet weather, and it had no predators, so it multiplied fast. It damaged crops and gardens, and it became a host for dangerous parasites that affect humans and animals. Okay, एक और species है जो इस article में जिसकी बात की गई है, Gambusia. Okay, it's a fish introduced in India to control mosquito larvae. All right. But instead of solving the problem, it outcompeted native fish and disrupted aquatic ecosystems. Okay, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ इसने क्या किया कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको भी डिसरप्ट कर दिया. एक और है पार्थेनियम वीड. ओके, पार्थेनियम वीड. अब पार्थेनियम वीड क्या करता है? जैसे कि एक्सीडेंटली 1955 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि जब इंडिया दैट टाइम इंडिया यूज टू इंपोर्ट व्हीट फ्रॉम द यूएस. ओके, सो इट स्प्रेड रैपिडली एंड नाउ ग्रोज इवन इन रिमोट आइलैंड्स लाइक द अंडमान्स. So these examples show how even well-meaning introductions or even accidents can go horribly wrong. Okay, so talking about India's situation, students, India is both a major importer and exporter of species, especially in the aquarium trade. Okay, जैसे species बहुत सारे हैं जो you just go through this article. जैसे एक tilapia है, which is a fish meant to boost production. It is now harming native freshwater fish. Guppies and angelfish, which is now a common aquarium pets, they are now found in Indian rivers. Okay, so a रिसेंटली एक स्टडी भी की गई थी कुछ साल पहले 2022 में, and that study found that India may lose 10 lakh crore in the next 50 years due to these invasive species. Okay, yet many species present in India, they are still unrecorded or poorly tracked. That means the problem may be even bigger than we think. Okay,
तो प्रॉब्लम क्या है जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? द न्यू ट्रेड अलायंसेस दैट आर बीइंग फॉर्म्ड रैपिडली, लाइक आफ्टर द ब्रेक्सिट, यूएस चाइना टैरिफ वॉर, और या फिर इंडिया का चेंजिंग ट्रेड पार्टनर्स है। तो उसके साथ क्या होता है कि दे ऑफन फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज, दे डोंट कंसिडर इकोलॉजिकल रिस्क। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंस्पेक्ट गुड्स प्रॉपरली, कि वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं कि साथ साथ कुछ इन्वेसिव स्पीशीज आ रही है, right? And this opens the door to new and unknown invaders. Moreover, students, as climate change alters temperature, some invasive species may find it even easier to settle into new environments. Okay, तो क्या किया जा सकता है? Well, experts have suggested several steps to fix this, जैसे better quarantine systems हो गया, mandatory biological impact assessment हो गया, जो किसी भी न्यू ट्रेड करने से पहले चेक किया जाना चाहिए, right? And also there's need to have public awareness about to avoid exotic pets or release them. Okay, and also students, learning from past mistakes is key. The damage caused by species like the African snail or Parthenia whale shows that we need to act before it's too late. All right, so what would you can do as a student? Students, you need to question yourself. Would you allow aquarium fish from another continent to be sold here? Right? Would you like to buy certain species? Think about it. Discuss it with friends or in class. And this is how, science meets policy and how you can be a part of global solution. Okay, students? So that's all for today. I hope you learned something new, right? So let's meet in the next episode. Until then, stay curious, stay conscious. Bye bye.